Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today the lecture is number 30. So as you all know that before we move on towards our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of our previous lecture. Okay, in our previous lecture we talked about change. We talked about various factors of change, like for example, how we can bring positive changes in the public sector of Pakistan, how we can improve organizational effectiveness. Particularly in our previous lecture, we talked about there are different ways, with the help of those different ways or methods, we can minimize resistance to change. Because whenever we talk about change, there is always a resistance to change, because like having a resistance to change is a natural phenomenon. Now people who resist change, of course they have a reason and they have a logic, and of course there are certain root causes. So so after like the research explored that there are different methods, with the help of those methods we can minimize resistance to change. And the most important method we discussed in our previous lecture is of communication. So of course we can minimize resistance to change when we communicate with our fellows, when we communicate with our juniors, seniors, team members. So when we communicate, of course people they discuss their doubts, they discuss their confusions, they discuss their worries. So when they discuss different things, that whatever that comes in their mind, so meaning that that results in reduction of resistance to change. Then we discussed another method, like for example stress management. People have stress whenever they have like they are asked to go for change. Like for example, if you have certain job responsibilities and next day your manager asks you to like do some other work, so there is some change in your job responsibilities, or maybe there are certain change in your working methods. So you will definitely feel a kind of stress there, because most of us are used to our routines. Most of us, prefer the familiar over the unfamiliar. Because in our previous lecture, when we talked about the psychology of change, we discussed already that when somebody asks you to, like for example, go for change, so we prefer the familiar over the unfamiliar. For example, if a method is completely new to the sector, if the method is new in the world, so we have a natural resistance to change, so level is very high. But if that new method is new to your organization, but it is being used in your sector, in your country, so there you have a medium level of resistance to change. So meaning that we are used to routines, we have developed certain habits, and of course when we are asked to come out of those habits, we have stress in most cases. So there is a need of stress management. So we go for like different stress management techniques, and then we try to overcome the stress of our employees, and once we are able to do that, we can minimize their resistance to change. Of course, we talked about other methods to minimize resistance to change in our previous lecture, like for instance training. Now training is an ongoing process. Like improvement is an ongoing process. So there are no two different opinions on the significance of trainings. So training means what? Training means learning existing job skill requirements. So this is really very important, that we need to give training to our employees so they are able to learn new skills, new ways of working. So when they are able to like learn more,
their skill level improves, their competency level improves, and of course they improve their performance. So we can give trainings in, like for example, people who are working at low level, there are different trainings. People who are working at middle level or top level, there are different trainings. So for trainings, we need to go for skill gap analysis. So how you do that skill gap analysis? There is actual performance and then there is desired performance. Now actual performance जो कि आप deliver कर रहे हैं अपनी organization में, आप perform कर रहे हैं, और desired performance वो है जो आपका manager, आपकी organization आपसे expect कर रही है. So in most cases what we observe that there is a gap between the actual performance and desired performance. तो वो जो बीच में gap है, उस gap को identify करने के लिए we use different methods, like for example interviews, questionnaires, experiments, observations, simulation exercises. So there are different methods available to find out that what are the root causes of that gap. And once we are able to identify the root causes of that gap, then we customize like our training programs. We offer trainings in those areas which are really need of that employee. So we go for need-based trainings. So this is really very important. So when we provide training to our employees in their needed areas, they feel more satisfied and they feel more comfortable, and of course the result is reduction in resistance to change. We talked about other methods, and finally we talked about coercion. Okay, when all methods fail to minimize the resistance to change, we go for coercion. So we use our force, we use our authority, even we may terminate or suspend our employees. So this is the last method before like using like any termination or suspension decision. So we go for trainings, we go for better communication, we go for stress management. So we have used all methods, and if the result is not as per our desires, we go for coercion. Then in our previous lecture we have also talked about aspects of attitude, like we discussed that why people have a certain attitude. We discussed the reasons of that, and then how we can change the attitude of our employees. We have also discussed in our previous lecture. Now let us move on towards our today's topic of discussion, and that is budget. Now, why organizations need budget? This is really a very important question we need to ask ourselves. A household is a small economy which uses inputs and gives output in the form of services that it provides. So जब हम बात करते हैं एक household की, तो इट्स अ स्मॉल इकोनॉमी की हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इनपुट्स हैं और यहाँ पे एक आउटपुट्स वो दे रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके इनपुट्स क्या होंगे और आपके आउटपुट्स क्या होंगे. Similarly, when we talk about organizations use inputs and process inputs to give outputs. Now what are those inputs? I hope that you remember those different type of resources every organization needs. So whatever the size or type of organization, whatever the objectives of that organization, every organization needs resources. And those resources are human resource, financial resource, physical resource, and information resource. So these four resources are required as an input, and of course then we go for administration functions, like for example planning, organizing, leading, and controlling. So we are using those administration functions,
So we are taking input as different resources, and then organization move towards output. Here a very important question arises, that what is the difference between output and outcome? Now, output are the desired results. Outputs are the desired objectives. So whatever our targets are, if we are able to meet or exceed our targets, that is called the output. So results are the outputs. And outcome is, in order to achieve that output, desired output, you put in a lot of efforts. You put in a lot of smart work. And that results in your skill improvement, that results in your more competency, that results in your performance enhancement, and that is called your outcome. So organizational responsibility here is to ensure that इस input process output equation जो हम दे रहे हैं, input process and output, तो it is the major responsibility of the organization to ensure that कि output के साथ साथ outcome पे भी focus करें, ताकि in order to compete in the market, outcome is really very important. Organization need to control the use of resources to ensure that these are utilized for the purpose of achieving the goals of organization. Now again, very important, that it is really very important because we do not have unlimited resources, particularly when we talk about Pakistan. So when we talk about the public sector of Pakistan, we see that we do not have unlimited resources. So all the organizations, it is their major responsibility to ensure that they are fully utilizing these resources and they are allocating these resources as per their goals. Now, how one organization can allocate these resources in an adequate manner? Now, this is really a very important question. For that purpose, of course, we need to look at the strategic plans of our organization. So what are the strategic plans? What are the long-term plans? What are the short-term plans? And what are the goals and objectives? So for instance, we have different departments in an organization, and each department has certain goals and objectives to achieve. Each department has a certain role towards the effectiveness of their organization. So according to the responsibility level, according to the contribution of that particular department, according to the real needs of that department, resources are allocated on merit basis. And because the organization or the administrator, they want to get the best out of their people. They want to utilize fully all of their resources. Budgets also indicate what the organization plan to do in future. Now, when you look at the budget of any organization, it will also tell you that इस organization की future direction क्या है. So जो आपके long term plans हैं, उसकी direction जो है वो आपको पता चलती है from the budget plan of an organization. क्योंकि when you are allocating resources, जो अभी हमने discuss किया, कि you allocate resources as per the goals and objectives, for example, of a department. तो उन goals and objectives को achieve करने के लिए of course आप allocate करें, तो allocations जो हैं वो goals and objectives, like for example, how do we differentiate goals and objectives here? Goals means your long-term plans and objectives are your short-term. And objectives are coming out of the goals. तो आपके जो long-term plans क्या हैं, of course long-term commitments क्या हैं, और उसी तरह की long-term commitment के हिसाब से
you allocate resources. And that of course shows us the future picture of that organization कि ये organization किस तरफ को जा रही है. Now continuing our discussion on budget, for any organization, financial resources are an important input to the running of organization. Of course, जब हम बात करते हैं 4 type of resources की, जो कि अभी previous slide में हमने discuss किया, financial resource is one of the most important resource, and for adequate running of an organization, financial resource has a vital role here. Like for example, you need to pay salaries to your employees, you need to purchase raw material, you need to like outsource different activities. So your organizational is involved in various type of activities. So in order to perform all those activities, we need financial resources. Organization generates resources to make expenditures to produce goods and services. So another very important role here that organization is not only using resources, organization is also generating resources in order to make expense, to produce goods and services. So every organization, they have a purpose. They have a vision, they have a mission, they have a goal, they have an objective. Private organization price their product or services on the basis of value of the product or service and cost in producing product, and in this way generate income. So talking about the private sector, they are focusing on those customers who have that purchase ability. So private sector is focusing on the selected customers because they are producing products and providing services as per market needs and wants, number one. And then private sector is also looking at the purchasing power of the target market and then providing their products and services to the target market and making profit out of it. But organization also create assets to produce output which are source of income. So at the same time, organizations are making their assets. So that is a source of income. Now let us discuss the major definitions of budget. First one is, budget is an instrument of financial control and management. Now what do you understand by this definition? So budget is an instrument of financial control. Of course, in every organization, you need to ensure the accountability. You need to ensure that your practices are as per procedures. So for financial controls, you need to have a budget. For better management, you need to have a budget. Because in budget, you allocate resources and then you ensure that कि जो आपने resource allocation की है उस पे अमल किया जाए. So for any financial control, budget is one of the instruments that is being used in the organization. It is summary of intended expenditures along with proposals for how to meet this expenditure. तो ये आपकी एक किस्म की एक एस्टिमेशंस हो रही हैं, आपकी एक इंटेंडेड एक्सपेंडिचर्स हैं, एक समरी है बजट, और इसमें प्रपोजल दी जा रही हैं कि उस एक्सपेंडिचर को किस तरह मीट किया जाएगा. सो इट मीन्स कि आपने एस्टिमेट किया, आपने बताया कि आप अपने आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप एक डिफरेंट प्रपोजल्स देते हैं कि जी किस तरह उन एक्सपेंसेस को मीट किया जाएगा जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है.
Budget is also detailed plan of income and expenses expected over a period of time. So in short, बजट एक आपका डिटेल्ड प्लान है जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस को शो कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है ओवर ए गिवन टाइम फ्रेम, कि आने वाले 1 साल में, 6 महीने में, 1 माह में, 3 माह में आप देख रहे हैं कि आप मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल, एनुअल, ईयरली जो आप प्लान्स बना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका एक डिटेल्ड प्लान है कि आपकी इनकम क्या होगी और आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, उसकी आप एक डिटेल्ड प्लान आप दे रहे हैं. Budget also provides guidelines for managing future investment and expenses. Of course, budget is really very important when you talk about investment and expenses, because आपकी future investment क्या होगी, आपकी future expenses क्या होंगे, उसकी जो guidelines हैं, जो instructions हैं, वो budget से आपको आ रही हैं कि आपने future में कहाँ कहाँ invest करना है, आपके कहाँ कहाँ expenses होने जा रहे हैं. तो तमाम गाइडलाइंस तो पीछे जो हमने इसी स्लाइड में बात की फर्स्ट बुलेट में. सो बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. तो इसको जब आप लिंक करेंगे यहां पे लास्ट बुलेट के साथ कि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के लिए गाइडलाइंस दे रहा है आपको, सो दैट इंश्योर्स योर फाइनेंशियल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ बजट. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक इनकम. Just as households have income, governments also have source of income. हम जब किसी भी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो they have different sources of income. Like सबसे पहले एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर में आपकी क्या इनकम है. Like for example, आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है. Like आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके गार्डियन हैं. तो जो इनकम आपके घर में आ रही है, जो इनकम आप मुख्तलिफ सोर्सेज से अर्न कर रहे हैं, दैट इज योर हाउस होल्ड इनकम. इसी तरह से गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए दे नीड टू हैव इनकम. सो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को भी दे नीड टू हैव इनकम्स एज ए सोर्स, उनको चाहिए. एंड देन द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस. जैसे हाउस होल्ड में हमने बात की कि आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिल रही है, सो दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम. तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड द टैक्सेस. सो टैक्सेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स. जब हम बात करेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सो बिसाइड्स taxes, government have non-tax receipts as well. Now, continuing our discussion on the components of public income, following, as you see in the slide, okay, following are the components of government income. The first one is the taxed receipt. Now, it can be divided into direct and indirect taxes. Okay, talking about indirect tax. Now here you see the example that जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं या मुख्तलिफ सर्विसेज के यूजर्स हैं, जब वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, they are paying taxes and that is called indirect tax. Whereas जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं मुख्तलिफ सोर्स से, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स चार्ज कर रही है. सो यू माइट हैव परचेज्ड अ बॉटल ऑफ कोक or some other drink on which the price is written plus tax. Like for example, we have a sales tax. The sales tax is indirect tax. Like for example, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप कोक ले रहे हैं, आप like for example कहीं से टी बैग्स ले रहे हैं, आप शूज़ परचेज कर रहे हैं, आप इवन कंप्यूटर्स परचेज कर रहे हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाते हैं. सो wherever you go,
whenever you use any product or you use any service, you are paying indirect taxes in the shape of sales tax. So sales tax is one example of indirect tax. Now talking about use of taxes, during the Mughal period and later British period, government pursued the policy of laissez-faire, meaning leave alone, which meant that government chooses not to interfere with the economy or society. Now this is really surprising for us. So when we talk about the Mughal period and then later British government period, we see that the government choose not to interfere with the economy or society. तो गवर्नमेंट ने कहा कि सोसाइटी के साथ इंटरफेयर ना किया जाए, इकोनॉमी के साथ इंटरफेयर ना किया जाए और चीज़ों को एज इट इज़ जाने दिया जाए. The taxes that were collected were for the purpose of defense or law and order, and the welfare concept was non-existent. Again, a very important thing here we are going to discuss now, that डिफेंस के लिए एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन वेलफेयर ऑफ द पीपल ये कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, जिसकी वजह से टैक्सेस की तरफ गवर्नमेंट का फोकस नहीं था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन in Pakistan. The governments of today have many sources of income, but taxes remain an important source of income. Government के पास बहुत से sources of income हैं, but these taxes, again I will re-emphasize that taxes are the major important source of income for the government of Pakistan. Today, government's expenditures have also increased manifold. आप किसी भी गवर्नमेंट को देख लें, you see that कि उनके expenditures बढ़ गए हैं. Like for example, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए आपको मुख्तलिफ ऑफिसेस की ज़रूरत है, आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. So in order to perform all the required activities, all four resources are required: human, financial, physical, information. तो जब ये तमाम resources आपको required है, तो of course government need money and they have expenses. The main expenditure purpose is redistribution of income from rich to poor or help finance welfare activities. So this is really very important कि income redistribution की यहाँ पे बात की जा रही है कि हमने जो अमीर से लेकर गरीब को देना है. That is the basic concept here. So when we talk about the principal purposes of taxation, this is one of the most important purpose that कि जो लोग बहुत rich हैं उनको टैक्स लगाकर उनसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको पे करने पड़ते हैं, और वो जो वहाँ से इनकम जनरेट होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो रिच से पुअर के ऊपर स्पेंड की जाती है फॉर देयर वेलफेयर इन पाकिस्तान. Another purpose is to achieve economic objectives such as control of inflation, economic growth, employment and reduction of balance of payment deficit. Now this is really very important कि जो economic objectives हैं, and the most important thing is control of inflation, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट टैक्सेस आर मैंडेटरी. फॉर एग्जाम्पल जब टैक्सेस लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट अर्न करती है इनकम, तो जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है इनकम, उस इनकम को फिर
यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑपरेशंस को, उनके नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो पीपल हु गेट गवर्नमेंट जॉब्स, ऑफ कोर्स वो जॉब्स उनको कैसे मिलेंगी, बिकॉज उस इदारे को जब एक्सपेंड किया गया, उस इदारे की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को इन्हांस किया गया, सो दे गॉट एम्प्लॉयमेंट देयर, एंड government, of course, government pay salary to the public servants. So of course these taxes are required to generate income, and that income is being used to pay salaries to government employees. Now, continuing our discussion on the principles of good taxation, we talk about foundation of modern economy. Since the foundation of modern economy was laid, there has been many changing ideas and philosophy on the role of government. Alongside the idea and principle of good taxation has also evolved. Now talking about Adam Smith's role here. Adam Smith, the economist who wrote Wealth of Nation in 1776, said that a good tax has following 4 principles. So when you look at this slide, you see that there are 4 principles. In this slide you see the 2 principles. The first one is, according to Adam Smith, a good tax should be equal. Now what does it mean? It means that equality, an individual should be called upon to pay tax according to his her ability to pay tax. So equality in taxes, like for example, if you are charging tax from one person and if you are charging tax from another person, so the tax charge from 2 persons should be equal. If you are charging different taxes from different persons having the same income level, this is unfair. So having equality in taxation is really very important, and this is called progressive taxation, where the rich pay the higher percentage of taxation than poor. Again, very important that the rich pays more tax as compared to poor, because the source of income is high in case of rich and the income is low in case of poor. So the government is charging high tax from the rich and charging low tax from the poor. A good tax should be certain. People are certain about how the tax works and how much has to be paid, as well as when to pay. So there should be a condition of certainty. People should exactly know कि उन्होंने टैक्स कब देना है, कितना टैक्स देना है, कैसे टैक्स देना है, और ये जो टैक्स लिया जा रहा है इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ पे यूज कर रही है. सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, this is really very important that we should have the trust of people जो टैक्स दे रहे हैं. So of course यहाँ पे ये चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि when we have the trust of people on the taxation system, they are more willing to pay taxes. And when people have uncertainty about taxation system, so उनका motivation level decline होता है and most of them are unwilling to pay the taxes. Now another principle according to Adam Smith here is a good tax should be convenient. People should be able to pay without any inconvenience.
वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर टैक्स पे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, अगर आप बहुत आपको इनकन्वीनियंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं, बहुत लेंथी फॉर्म्स हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि फ्यू इयर्स बैक जो टैक्सेस के जो फॉर्म्स थे जो फिल करना होता था, जो टैक्स पेयर्स हैं दे वर रिक्वायर्ड टू फिल अ फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो फॉर्म्स को एक तो उनके नंबर ऑफ पेजेस को कम किया गया, उसमें उसको सिंपल करने की काफ़ी कोशिश की गई ताकि एक आम पर्सन उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, और दूसरा टैक्स ऑफिसर्स को ज़्यादा बेहतर ट्रेन किया गया ताकि वहाँ पे जो लोग जब टैक्स पे करने के लिए आते हैं तो उनको आसानी हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किस्म की परेशानी ना हो। A good tax should be economical. The cost of collecting and administering should not exceed revenues. ये ना हो कि आपने 100 रुपीज़ टैक्स जो है वो रिसीव करना है गवर्नमेंट ने, और 100 रुपीज़ टैक्स लेने के लिए अगर आप 100 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि जब आप टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस उसमें ना हो जाएं कि जो आपका रेवेन्यू है वो कम हो जाए और आपके जो प्रोसीजर्स के ऊपर जो आपका एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाए। सो एडम स्मिथ टॉक्ड अबाउट these wonderful principles of good taxation, and when we apply these good principles of taxation we can achieve our objectives. The government is able to improve taxation system, the government would be able to collect more taxes, and the people will be more motivated to pay their taxes. Because here when you look at these slides again, you see that the focus is on equality, the focus is on certainty, the focus is on convenience, and the focus of a good taxation system is on economy. So now you see that almost all the major aspects have been covered by Adam Smith when he has given these 4 principles of good taxation. Now there are some other principles of modern taxation, and we are going to discuss these now. Now these are: tax should be impartial. So there should be no bias when you are charging a tax. Two citizens who earn equal income and have same size of family should be taxed the same. Now people having same income, people having same family size, if you charge them, if you ask them to pay different taxes, that will be of course biased. So the government should be impartial when they go for collecting taxes. It should not be incentive to hard work, and therefore should not penalize for hard work. That is, that those who work hard and earn income should not be heavily taxed. Another very important principle of modern taxation is the tax should be consistent with government policy. Government they make different policies. With the passage of time they bring improvements. So whenever a new government comes in, they come up with new policies. Like for example, when one government comes in, they have different policies. The other government when comes in, they have another policy. So every government has, in most cases, has a different focus. Now
If, for example, the government is trying to reduce inflation, it should not pursue the policy of taxation which increases demand too much in the economy. तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्फ्लेशन को कम करे इन पाकिस्तान, तो दे शुड नॉट गो फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड. Of course, if you go for increasing the demand, the inflation rate will go up. Now, talking about the types of taxation here, taxes tend to fall in two categories: direct and indirect taxation. Direct taxation is a tax levied directly on individuals' income, whereas indirect taxation is levied on consumers' expenditure or outlay. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आप की जो एज ए इंडिविजुअल जो आपकी इनकम है उसके ऊपर एक डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो एट सोर्स उनके ऊपर टैक्स लग जाता है कि जो सैलरीज वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो सैलरी वो टेक होम लेके जा रहे हैं, तो उनको जो चेक मिलता है या जो उनके अकाउंट में उनकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, तो पहले उसमें से टैक्स को माइनस किया जाता है और उसके बाद वो सैलरी उनकी ट्रांसफ़र होती है उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में. ऑन दी अदर साइड, आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं मार्केट से, so you pay indirect taxes, for example in the shape of sales tax. Now when you look at this slide, you see that these are the different types of taxation. Like जब हम direct tax की बात कर रहे हैं तो direct tax के अंदर कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं? We have the income tax, we have the wealth tax, we have the workers welfare tax, and we have the capital tax. Now talking about the indirect taxes, we talk about custom duty, we talk about sales tax, and we talk about excise duty. Now in previous slide जो भी हमने डिस्कस किया कि स्लाइड में अगर आप देखें कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, कि जो डायरेक्ट जो आपका इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया और एट सोर्स आपसे वो लिया जा रहा है. ऑन द अदर साइड, लाइक फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, कि आप दूसरे मुल्क से कोई चीज आप प्रोडक्ट लेके आते हैं पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, कि अगर आप बाहर से कोई कार लेके आते हैं या बाहर से कोई कार मंगवाते हैं आप, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही है. अगर आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी है, एज पर रूल्स जो भी उसके ऊपर टैक्स होगा वो आपको देना है. सेल्स टैक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स दे रहे हैं. कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 रुपीज़ की कोई चीज़ ली है तो उसके ऊपर एक आपका सेल्स टैक्स है जो आप उसके ऊपर दे रहे हैं. सो प्रोडक्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टोटल जो आपने पे करना है. एंड देन एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हैं इन द शेप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन टैक्स रेवेन्यू हियर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज. Of course, government of Pakistan, they are like earning income from various sources with the help of taxes on property as well. कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक घर है और उसमें कितने मरले का वो घर है, उसका कितना साइज है, कितने स्क्वायर फीट का वो घर है, सो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ. उसमें डेफिनेटली एग्जम्पशंस भी हैं, कुछ छोटे घरों के ऊपर एग्जम्पशंस हैं, या कुछ ऐसे लोगों को जो कि टोटली उनके पास एक ही घर है. सो एक डिफरेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है. सो हर गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, या अगर आपके पास इतना बड़ा घर है या छोटा घर है या एक दरमियाने साइज का घर है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स है
So there is a procedure for that. Profit from railways, profit from Pakistan Telecommunication Company Limited, profit from post offices, and miscellaneous like foreign travel, passport fee, airport tax, sale proceed on oil and tax, etc. So now you see that कि these are the non-tax revenues कि गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ एरियाज में से टैक्सेस जो है वो लगा के वहाँ से इनकम जनरेट कर रही है कि लाइक फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट टैक्स है या कोई भी आप पासपोर्ट फी है, आप पासपोर्ट लेते हैं तो उसका एक टैक्स आपको देना होता है, थिंग्स लाइक दैट. सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान levies all the above type of taxes. Now let us discuss what are the advantages of a good direct tax. So these are the advantages. We are going to discuss these one by one. And the first one is direct taxes tend to be progressive. जो direct taxes हैं आपको development की तरफ लेके जा रहे हैं. So it's really a major source of income for the government of Pakistan. और direct taxes definitely जब government ले रही है तो उसको एक तो collection के में आसानी है and the collection के साथ साथ definitely direct taxes में government जब taxes ले रही है तो वो government इसको welfare of the people of Pakistan के लिए use कर रही है. तो जितने ज़्यादा direct taxes होंगे उतना ही बेहतर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. People in the higher income groups pay greater taxes than poor people. That is, income tax is graduated so that high income earner pays a larger tax. Of course, higher the income, higher the tax. तो जो लोगों की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स देते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, और जिन लोगों की इनकम कम है पाकिस्तान में वो कम टैक्सेस दे रहे हैं एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स. ओके, टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टेड वेल्थ टैक्स, जिन लोगों के पास जितनी पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा वेल्थ है उसी हिसाब से उनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको चार्ज करती है. सो जिनके पास जितनी ज़्यादा वेल्थ है एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा, सो उसी हिसाब से उनके ऊपर टैक्स जो है उनको चार्ज किया जाता है. सो इट इज़ चीप एंड ईजी टू कलेक्ट जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, बिकॉज आप सोर्स के ऊपर उसको चार्ज कर रहे हैं. एंड देन कंसिडर फॉर एग्जांपल पे सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू कलेक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम वेजेस एंड सैलरी अर्नर. कि जैसे मैंने पहले बात की कि आप सोर्स के ऊपर चार्ज कर रहे हैं कि आपको जो सैलरी मिल रही है, जो आप अर्न कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जो सैलरी लेके आ रहे हैं, तो जो आपको तनख्वाह मिल रही है तो एट सोर्स वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपसे ले लिया जाता है कि बिफोर इशुएंस ऑफ चेक और बिफोर मतलब सैलरी ट्रांसफर्स टू योर अकाउंट, उससे पहले वो टैक्स जो है वो चार्ज कर लिया जाता है. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट इज़ अ चीप एंड ईजी टू कलेक्ट मैथड. क्योंकि चीप इस तरह है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं है, और इजी इस तरह है कि डेफिनेटली एक फिक्स्ड है कि पहले से गवर्नमेंट को उनके पास एक डेटाबेस है, उनको मालूम है कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनकी कितनी सैलरीज हैं और उन सैलरीज पे टैक्स जो है उन्होंने कितना देना है. Now talking about the impact of taxation, so taxes have variety of impact as follows. जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, on savings and investment, higher direct taxes reduce individuals and firms' ability to save and invest. Now this is really a very important impact of taxation. So जब आप higher direct taxes करेंगे तो definitely this goes to savings and investment, because higher direct taxes reduce individuals and firms' ability to save and invest. To a certain extent, it depends on how much of the increase in taxes is financed from savings and how much from consumption. So इसके different pros and cons हो सकते हैं यहाँ पे. So this is really very important कि savings और जो investment point of view से यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है
कि उसके टैक्सेशन जो है उसका क्या इम्पैक्ट है. Then talking about prices, on prices, higher direct taxes have deflationary effect on prices by reducing demand. However, trade unions may ask for higher wages to compensate for higher taxes, and effect of this will be inflationary. तो एक तरफ तो आप जब प्राइसेस के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं तो इट हैज़ ए इम्पैक्ट कि जी आप डिमांड जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं. ऑन द अदर साइड जब आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर की, ख़ास तौर पे जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे जो यूनियंस हैं दे आस्क द गवर्नमेंट कि उनकी सैलरीज को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि आपने इधर प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ किया है डायरेक्ट टैक्सेस लगा के, तो आप उसके हिसाब से आप चाह रहे हैं कि हमारी वेजेस सैलरीज को भी इंक्रीज़ किया जाए. तो एक तरफ तो अगर आप देखते हैं कि दैट इज़ अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट, ऑन द अदर साइड देयर इज इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. Now talking about the impact of taxation on economy, higher taxation will, other things being equal, reduce demand in the economy, which will have deflationary effect on the economy. So this is really a very important impact of taxation when we talk about the economy of Pakistan. Now let us talk about the administrative control, and with this we are going to talk about administrative accountability. Now, according to Leonard D. White, accountability is the sum total of constitutional, statutory, administrative and judicial rules and precedents and the established practices by means of which public officials may be held accountable for their official actions. So in short, इससे हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो जो भी एक्शंस लेंगे दे आर अकाउंटेबल. एट द सेम टाइम लाइक फॉर एग्जांपल जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, तो they perform different functions. So in order to perform different functions, they take different actions. और जो implementation करते हैं, जिन actions को वो implement कर रहे हैं, जिन decisions को वो implement कर रहे हैं, उसमें accountability factor is really very important. So talking about administrative accountability, Leonard D. White further says that it refers to the formal and specific location of responsibility vested in a person. So here you ensure that कि जो person है जिसकी responsibility का level क्या है, कि like for example a person is working in an organization, so that person has certain responsibilities जो कि उसके designation के साथ link करती हैं. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर्सन के डेजिग्नेशन के साथ लिंक करती हैं, सो हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर द अकाउंटेबिलिटी. तो जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. While responsibility has a personal and moral connotation and is not necessarily related to formal status and power. Accountability is also defined as the answerability of a person in organization. So in very simple words, accountability is also called answerability. कि आप जवाबदेह हैं, आप जो काम भी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जो एक्टिविटीज भी करते हैं, आप जो डिसीजंस भी लेते हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल. आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो काम भी किया है वो क्यों किया है, उसके क्या बेनिफिट्स थे, आपने अगर कोई एक्सपेंस किया है तो वो आपने क्यों किया है, अगर आपने कोई डिसीजन इंप्लीमेंट किया है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. सो यू आर आंसरेबल टू योर all stakeholders. You are answerable to government. So this is really very important that
accountability factor should be there, because अगर accountability को ensure ना किया जाए तो definitely we cannot expect good implementation and good decisions from the organization side. So accountability and responsibilities goes side by side. Now let us discuss the meaning of control. Accountability is a kind of management control. तो जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज अकाउंटेबिलिटी. क्या आप कहते हैं कि किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेटर कंट्रोल हो, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इंश्योर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंट्रोल को, जैसे हमने डिस्कस किया बजट्स में, जब हम डिस्कस किया हमने प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, बेटर कंट्रोल हो, एक फाइनेंशियल कंट्रोल हो. सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेबिलिटी. कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट actual activities conform to established standards and laid down procedures. So this is really very important कि जब आप बात करते हैं कंट्रोल प्रोसेस की, तो कंट्रोल प्रोसेस इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपके लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं, जो आपके एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपके एक्चुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं और आपके प्रोसीजर्स क्या हैं, आपके रिटन प्रोसीजर्स क्या हैं. तो क्या आप अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को, जैसे हम कहते हैं एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्या आप अपने एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपके जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उसको फॉलो कर रहे हैं. सो कंट्रोल इंश्योर्स दैट. एंड देन टॉकिंग अबाउट कंट्रोल, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स. ऑफ कोर्स कोई मैनेजर कितना इफेक्टिव है. नाउ इफेक्टिव में मीन्स दैट द रिजल्ट्स ओरिएंटेड, कि when you are able to achieve your objectives, when you are able to achieve your goals, when you are able to achieve your targets, you are effective. So control really helps managers to become more effective. Now let us discuss different types of accountability. So there are two types of accountability mechanisms that organizations have to continue to achieve goals. These are discussed in this slide. You see that the first one is the internal control. Internal control is exercised either by supervisor over the subordinates within the chain of hierarchy or by other parallel agencies in the executive branch of government. So it consists of directing, regulating, supervising, advising, inspecting and evaluating. So internal control में आप क्या कर रहे हैं? In short, you are directing, you are giving instructions, you are regulating, आप regulate कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को organize कर रहे हैं as per your regulations. Supervise कर रहे हैं, आप monitoring कर रहे हैं, and then advising, of course, आप advise कर रहे हैं, you are motivating. Inspecting, आप inspection कर रहे हैं, it is very close to supervision, and then evaluating, आप assess कर रहे हैं कि क्या वाकई हम वही achieve कर रहे हैं, क्या वाकई हम उसी तरह perform कर रहे हैं जो कि हमारे एक desired हमारे standards से, क्या हम उसको follow कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम अपने targets की तरफ move कर रहे हैं या नहीं कर रहे. So you are doing that evaluation as well. It should be continuously done without being felt. This mechanism of accountability has positive results also. So in short, when we say talk about internal control, if it is appropriate, it ensures positive results in an organization. The other type of accountability is called external control. External control is fitted outside the administrative machinery and works within the general constitutional framework of the system. So it is exercised by the external bodies such as
legislature and judiciary. तो outside the organization एक control है. Like for example, मुल्क का legislature क्या है और जो एक judiciary का role है. So they ensure that external control when we talk about the accountability of an organization. Okay, in our today's discussion, we talked about budgets, we talked about taxation system, we talked about direct and indirect taxes, and of course, its implications on the people of Pakistan, and of course, we have also discussed the various ways how governments meet their expenses. So, we have discussed all of these with the help of examples from the public sector of Pakistan. I hope that कि आज के lecture से आपने काफ़ी learn किया होगा. Inshallah, see you all in the next lecture. Thank you very much for your kind attention.